Okay, so we have this theorem regarding the isometry between two surfaces. As I said, isometry has to be a diffeomorphism between two surfaces that preserves the length of an arc. So we say, theorem hai ki if the two surfaces have the same fundamental form, rather two surface patches, if they have the same fundamental form, then any diffeomorphism would be an isometry. In other words, a diffeomorphism F from S1 to S2, where S1 and S2 are smooth surfaces, is an isometry if and only if, या पहले लिखता हूँ मैं जरा, is an isometry for surface patches for any surface patch. We here mean by this we mean local isometry, and for a small infinitesimal arc length in S1, it would have the same length as f of that arc length inside S2. So as an isometry for any surface patch, let us denote it by sigma of S1 if and all and the patches diffeomorphism is an isometry is an isometry is an isometry if and only if for any surface patch sigma 1 of S1, the patches sigma 1 of S1 या patches sigma 1 जो कि S1 के अंदर ही है, and F composition sigma 1 of S1 and S2 have the same first fundamental form. Have the same first fundamental form. Okay, so we have got patch, surface patch. मान लीजिए surface patch है एक छोटा सा टूटा surface का, जिसका नाम है sigma 1, और यहाँ पे एक छोटी सी arc length है. यहाँ पे कोई दूसरी surface है, which is S2, and F is a diffeomorphism on it. So I'm saying that it would preserve the length, that is जो यहाँ पे इसका image length होगा, इसकी length और इसकी length same होगी if this one and जो यहाँ पे इसका f of sigma 1 होगा, यानी जो इधर होगा कोई इसका हिस्सा इसका जो image होगी in S2. So they have the same fundamental form, means they have the same values for EFG, the first fundamental form, which are numbers evaluated at certain points. अगर यहाँ इस patch में EFG का जो values मिलेंगे हमें, अगर वो इस patch में भी same है, then the arc length would be preserved. So that is the idea. In fact, if and only if. So let's do the proof. Proof भी इसका उतना मुश्किल नहीं है basically. So suppose that sigma 2 is equal to f of sigma 1. यहाँ पे इसका जो patch है उसका नाम हमने S2 लिया, and let sigma 1 and sigma 2 have the same first fundamental form.
and let, now if t goes to ut vt is any curve in my u plane, in the domain of, just जब मैं इसको, okay, let me now write it here. देखो, अब जो मेरा सरफेस की जो डोमेन है, इट इज व्हाट वी कॉल यूवी प्लेन. इसमें दो वेरिएबल्स है, इसको हम कहते हैं यूवी प्लेन, यानी जहां पे यू हैव ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स. सो अब अगर मैं यहाँ पे कोई आर्क लूंगा इसकी डोमेन में, दिस इज माय यूवी प्लेन. So it would map to an arc here. So for any arc in the surface, I can find a curve inside this plane. So वही मैं कह रहा हूँ, अगर t goes to ut vt, now this is my curve inside uv plane, right? जिसका कोई u coordinate है, v coordinate है, which defines it on a certain parameter. Then be any curve in u, right? U, where u is open set in uv plane, right? So अगर ये यहाँ पे एक open set में इसकी curve है, so that would gives rise to a surface patch here, and inside this surface patch I will get r at utvt. So and alpha 1 at t अगर एक curve है on the surface, which would be sigma 1, because sigma is the patch here on the surface. Sigma 1 applied to this utvt, which is a patch of surface here, in which you would have a curve sigma 1 utvt, and of course then I would have alpha 2 at t, which would be, ये जो map हम करेंगे इस curve को इधर, यानी वो होगा f composition sigma 1 of ut at vt, ऐसे कर लो, at u at t v at t. ओके, जिसको हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे, this is sigma 1 of sigma 2, because f composition sigma 1 को हमने sigma 2 नाम दे दिया. It would be sigma 2 of utvt, जिसको हम नाम देंगे इसकी, मतलब that's our alpha 2 at t, क्योंकि है alpha 2 at t. Okay, so now I have got one curve here alpha 1, और यहाँ पे उसकी जो इमेज में है उसका नाम मैंने दिया alpha 2, इस curve को, and it's f of alpha 1 basically. It is clear, ये तो obvious है, it is clear that alpha 1 and alpha 2 will have the same length. Why? Because of the formula for the length of the curve. Will have the same length. Why? Because since both lengths are found, are evaluated by integrating expressions e u dot square plus twice f u dot v dot plus g v dot square whole raised to power 1 by 2, where e du square plus twice f du dv plus g dv square is the first fundamental form. अगर तो ये सेम है, तो जब हम आर्क लेंथ करते हैं तो आर्क लेंथ कैसे डिफाइंड है, तुमने किया होगा पहले यूनिट में. Anybody can remind me? Is the first fundamental form. पता है ना आर्क लेंथ कैसे हम डिफाइन करते हैं?
It is basically we integrate this. जहां से भी हमें आंकड़े चाहिए से A to P, we just have to integrate this alpha dot t with respect to t, जो भी तुम्हारा वेरिएबल, यानी इसको हम वेक्टर, इसको हम वेलोसिटी वेक्टर स्पीड को इंटीग्रेट करेंगे एक तरह से, बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कर्व. सो दिस इज द आर्क लेंथ एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर मैं अल्फा डॉट टी लूं ऑन अ सरफेस, सो अगर मैं देखूं व्हाट इज अल्फा डॉट टी का स्क्वायर, दैट इज बेसिकली अल्फा डॉट टी डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा डॉट टी. और बाय द वे अल्फा डॉट का मतलब है इट इज डी अल्फा बाय टी, राइट. नाउ अल्फा टी चूंकि एक सरफेस पे अगर एक है, then this would be the same as r at UTVT. और जब इसका चेन रूल तुम लोगे, alpha dot t जो होगा it would be the same as, because it also satisfies the equation of the surface जो भी तुम्हारी हो. Yeah, in here we have surface patch, but surface patch means part of a surface, so it would also satisfy the equation of that. It is the same as the equation of that surface. Now this by chain rule would be, because it depends upon u and v, and u and v in turn depend upon t. So this would be del r by del u into du by dt plus del r by del v into dv by dt. That's the chain rule, and that means it is basically alpha dot t is equal to ru into u dot का मतलब du by dt plus rv multiplied by v dot. And if you take dot product with itself, तो alpha dot t अगर इसके साथ dot product लेंगे हम खुद का, so that would be of course, let me write here. So alpha dot t dot product with itself would be equal to, this is the same thing as norm of alpha dot t plus square. Now this would be equal to r sub u dot plus r sub v dot, whole thing dot product with itself, r sub v dot. अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर वेक्टर एडिशन, दैट वुड बी बेसिकली r u dot r u dot square, पहली टर्म के साथ ये स्केलर है, ये वेक्टर है. Then I would have ru dot rb, then I have u dot v dot plus इसी तरह से होगा rv dot ru u dot v dot, और then you should have rv dot rv v dot square. अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है और ru dot ru ये तो e है, ये f है और ये g है, यानी it is just e u dot square plus twice f u dot v dot plus g v dot square. तो दैट इज, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अल्फा डॉट टी, ये तो स्क्वायर है इसका, would be eu dot square plus twice f u dot v dot plus g v dot square whole raised to power 1 by 2. So अगर मैं आर्क लेंथ मेजर करूंगा किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक, छोटी सी, जो मेरा इंटीग्रैंड है वो चेंज नहीं है. अगर मेरा फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम है, तो यहाँ जो इंटीग्रैंड आएगा, मतलब अगर ई एफ जी दोनों पैचेस के लिए सेम है, then what? Then this is basically, चाहे it's always equal to eu dot square plus twice f u dot v dot plus g v dot square whole raised to power 1 by 2. जो भी t के वैल्यूज हम देखना चाहें फ्रॉम a to b, तो आप वही आएगी. और चूंकि ये दोनों के लिए सेम है, तो दोनों साइड्स, दोनों पैचेस के लिए चूंकि ई एफ जी के वैल्यूज जो हैं वो सेम है, तो इसके वैल्यूज भी सेम आएंगे और इसका मतलब आखिरी भी सेम रहेंगे. एक साइड से तो बिल्कुल इजी है. सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट, कन्वर्स. इसमें थोड़ा सा मैं मेहनत करूंगा. Okay. Now conversely, suppose that मान लो अब
it's an isometry. Inversely, suppose that F is an isometry. And we have to show that then the surface patch sigma 1 and F of sigma 1, they must have the same first fundamental form. Okay, suppose it's an isometry and let the same fundamental form T goes to UTVT, जैसा कि मैंने कहा था, is a curve in U in an open set U in UV plane defined, okay, what for some T would lie in some interval, let's call that alpha beta. Then the curves, then the corresponding curves well, I would have alpha 1 at T. That would be the patch 1, that is, it would be sigma 1 of UTVT. And alpha 2 at T, that's nothing but F composition of this thing. In sigma 1 and sigma 2, respectively, have the same length. क्योंकि मैं मान रहा हूँ S is an isometry, have the same length. That is, the integral from any point T to T, let me call it E1 U dot square plus twice F1 U dot V dot plus G1 V dot square whole raised to power 1 by 2 dt must be equal to T naught to T 1. कोई भी दो values ले लो, which lie in the given interval. I should have E2. अभी में E1, E2, they are the first and second, first order fundamental magnitudes for sigma 1 and sigma 2 respectively. I would write that it will be twice F2 U dot V dot plus G2 V dot square whole raised to power 1 by 2 dt. Yes, so where E1, F1, G1 are the first order fundamental magnitudes of the patch sigma 1 and E2, F2, G2 are the first order fundamental magnitudes of sigma 2. Okay, we have to show that essentially that E1 is equal to E2, अगर हमने वो दिखा दिया, F1 is equal to F2 and G1 is equal to G2. This is true for all जो हमारा patch था, यानी T2, T1 belonging to the domain alpha beta, जहाँ से हम जो हमारा T का domain है, जहाँ से हम length measure करेंगे. Okay, तो अगर ये true है, तो we can just integrate. So that would imply that E1 U dot square plus twice F1 U dot V dot plus G1 V dot square is equal to E2 U dot square plus twice F2 U dot V dot plus G2 V dot square. So let's call this equation star. So we show that now this is true for any T0, T0, हम जो भी curve
सरफेस में लेंगे उनके लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, because we just integrate both sides and you will get the left hand side is equal to right hand side. Okay, and choose the arbitrary constant 0, which we can do. No issue. Right. Now, what we do is this. Now what we do, we make particular choice for our curves, you know. थोड़ा सा इसमें अगर ये दोनों बराबर है, मुझे दिखाना E1 E2 के बराबर है, तो मैं पर्टिकुलर चॉइसेस लूंगा कर्व्स के लिए, ठीक है. By that I mean I fix T0 belonging to alpha beta and define my curve and for the, well, I choose a certain particular curve, because this is true for all curves where when I run my range my T1 within this interval alpha beta. So what I do is following three choices of curves. T goes to UTVT in my open set U in UV plane. तो choice क्या है? Choice 1. अगर मैं U को लेता हूँ, this is a valid curve, यानी U0 plus T minus T0 और V को रखता हूँ constant. So by that I mean जो मेरा UV plane है, अब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, जो मेरा डोमेन है, राइट, तो मैं क्या लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मतलब कोई U है, इसमें एक ओपन सेट, तो इसी को मैप में करके वो सरफेस पे ले जाता हूँ और फिर उस पे F लगा के दूसरे पैच में, मतलब दैट्स द आइडिया. अगर मेरा UV प्लेन इधर है, तो मान लो ये मेरी U एक्सिस है, ये मेरा V एक्सिस है, इसमें मैं एक छोटी सी कर्व लूंगा. वो क्या, मैं V0 V को फिक्स करूंगा, ये मेरा U कर्व है, ये मेरा V कर्व है, V को फिक्स करूंगा और U को लूंगा, as you can see, T minus T0. So basically अगर V0 फिक्स, अगर V फिक्स्ड है, it's a line parallel to U axis, क्योंकि V फिक्स्ड है, so it would be a ऐसी वाली कर्व ले रहा हूं. It's a valid curve, so it will be mapped to some curve here and some curve here, and for that curve I have got this thing, I have got E1 U dot square plus वो 0, मतलब ये दोनों साइड्स बराबर है. लेकिन इस कर्व के लिए U डॉट किसके बराबर होगा? As you can see, U डॉट, यानी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू T, U डॉट 1 आएगा और V डॉट 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो अगर U डॉट और V डॉट 0 आएगा तो फ्रॉम स्टार, which implies अगर U डॉट 0, अगर U डॉट 1 है, V डॉट 0 है, तो ये दोनों टर्म्स तो 0 होंगे और U डॉट 1 है, तो हमें मिलेगा इस कर्व के लिए, इससे हमें मिलेगा E1 is equal to E2. सिमिलरली अगर मैं दूसरी कर्व लूं यहाँ पे ऐसे, which is parallel to in the same domain, तो यहाँ पे एक corresponding कर्व आएगी, उसकी वो लेंथ प्रिजर्व करेगी, तो स्टार would hold for 3, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम स्टार. सेकंड कर्व अगर मैं लूंगा, अब U फिक्स्ड है एंड V को मैं लूंगा ऑफ कोर्स V0 plus T minus T0, so of course it would imply that what, it would imply that, it would imply that, right, G1 is equal to G2. Why? Because in that case now U dot would be 0 and V dot would be equal to 1. ठीक है ना? But it starts from a particular point, है ना? मतलब ये इस वजह से हम V0 से चाहते हैं, हम चाहते हैं शुरू करें V0 से. जब T is 0, then it would be V0 minus T0. Oh, nevertheless, so that's our curve. Then third choice अगर मैं लूं, अभी तो मुझे मिला E1 is equal to E1 G2. दूसरी कर्व में लूंगा something like this. U is equal to U0 plus T minus T0. And of course then I have V is equal to V0 plus T minus T0. तो इसमें क्या होगा, U0 बराबर 1 होगा, दोनों ही 1 के बराबर होंगे. ये कर्व समथिंग मान लो इस तरह की है. They are not exactly, but it would be again a straight line but not parallel.
in my UV plane, and it would correspond to a curve in this surface patch. जब मैं इसको F map करूँगा तो दूसरे surface patch में करेंगे. तो इसमें this would imply that U0 भी 1 के बराबर है, V0 भी 1 के बराबर है. इससे मुझे मिलेगा E1 plus twice F1 plus G1 must be equal to E2 plus twice F2 plus G2. लेकिन मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ E1 is equal to E2, G1 must be equal to G2. So implies that then F1 must also be equal to F2. Because E1 हम प्रूव कर चुके हैं E2 के बराबर है और G1 प्रूव कर चुके हैं G2 के बराबर है. So since this was valid for any arc, तो मैंने particular cases से दिखा दिया कि अगर जो arc length है वो जो छोटी सी arc length यहाँ पे preserve होती है उसकी length, then जो इन दोनों patches की जो fundamental forms हैं वो same होनी चाहिए, and we are done. Now again we are here talking about infinitesimal small arc lengths from one surface patch to another. तो मुझे syllabus देखना होगा कि हमारा और क्या रह गया. हाँ, एक और है कि एरिया ऑफ ए सरफेस पैच. ये तो आर्क लेंथ प्रिजर्व होती है, लेकिन अगर मैं छोटे से इस तरह से लूं, अब यहाँ पे ये नहीं है कि सपोज आई रीपैरामीटराइज सरफेस, सरफेस सेम है, और अगर मैं उसका पैच लूं एरिया का, राइट, सो दैट डज नॉट चेंज अंडर रीपैरामीटराइजेशन. तो ये शायद हमारा रह गया था. आई होप, और फिर भी चेक करूंगा मैं कि और क्या रह गया है इसमें थोड़ा से. The area of a surface patch is unchanged. ये भी बिल्कुल easy है. By reparametrization. Reparametrization. Proof. So let sigma from some open set inside our UV plane, right, to R3. मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे हम इसको लिख सकते हैं inside R2 to R3 be a surface patch. And of course, sigma tilde be a surface patch from U tilde contained inside R2 to R3 be a reparametrization of sigma. Be a reparametrization of sigma. Okay. With the reparametrization map, there has to be a map that connects U tilde with U. तो तभी तो ये reparametrization है. It connects this domain here with the domain here. Okay, with the reparametrization map, let's call it phi of U tilde V tilde is equal to UV. यानी ये एक तरह के पैरामीटर्स हैं, ये दूसरे पैरामीटर्स हैं. We have, since it is a reparametrization, जो resultant surface patch होगा वो same होगा. यानी we should have sigma tilde as a set of points inside R3, they should be same. So once we have done that, now let R tilde be a region inside U tilde and let R be equal to phi of R tilde. इसकी जो image आएगी under U, inside U, because phi is the map that connects. Phi is the map that connects our U tilde with V tilde. यानी sorry, U tilde with U.
You basically have reparameterization का मतलब ये है जो अपनी surface है, so you have r tilde u tilde is equal to you. Sorry, it's equal to r actually. Anyway, okay. So once I have done that, so okay, now we calculate the area. We have to prove that the area of a simple patch होगा surface का integral over this small region inside on the surface with respect to our first parameterization. So that would be, you just take this magnitude of the surface normal. तो बजाय r के मैं लूंगा sigma because we are looking at a patch, but it is just a restriction of r to a certain region. So मैं r भी लिख सकता था, लेकिन sigma u cross sigma v du dv should be, we have to do this. जो after reparameterization इसका जो मैप बनेगा वो होगा sigma tilde u cross, no, I should write u tilde sigma tilde v tilde du tilde dv tilde. यानी अगर मैं वहां से इवैल्यूएट करूं, यहाँ से इवैल्यूएट करूं, it should be the same. This is what we have to prove. जो नई reparameterization में जो patch का जो area आएगा, this is what we should have. By the way, this has to be, you understand why this would be the surface patch? So basically एक तो मेरी UV डोमेन है, तो फिर इसका एक surface patch है इधर, sigma. तो sigma is basically a map from the UV plane, right, to this sigma plane. So जब मैं area ढूंढने की कोशिश करूंगा, so I take it, मतलब इसकी जो okay, so what we do, we know there are certain the curves हैं यहाँ पे, जिनको पैरामीट्रिक कर्व्स हैं, जिनके अपने वेक्टर डायरेक्शंस हैं, आर यू यहाँ पे है आर बी, राइट. सो वी नो दैट कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ये जो एक छोटा सा पैरेललोग्राम यहाँ पे होगा, उसका जो एरिया होगा वो होता है आर यू क्रॉस आर बी. एंड इन केस ऑफ फॉर पैच, इफ वी restrict it to a smaller part, तो ये जो small, so we can denote it by del u cross del v. ये बिल्कुल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल छोटा सा जो रेक्टेंगल आता है ऑन अ सरफेस, तो सिंस जब मैं इसको छोटा करूंगा, मतलब ऑफ कोर्स ये तो होगा ना इन दिस डायरेक्शन, मतलब अगर मैं, मेरे कहने का मतलब है एज आई टेक वेरी वेरी स्मॉल पीस ऑफ इट, तो आई विल अज्यूम दैट कि जब मैं इन्फिनिटेसिमल पैच लूंगा सरफेस पे, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन जब मैं बहुत छोटा छोटा ऐसे करता जाऊंगा, इट वुड इवेंचुअली बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल जिसके साइड्स हैं आर यू आर वी. तो दिस इज द स्मॉल पैच, एंड इफ आई वांट टू सपोज नाउ फाइंड इसी तरह से छोटे छोटे पैचेस को मैं इस रीजन में करना चाहूंगा, you know what I do is I integrate, I take the double integral over this region, and of course take these small pieces, इस function, ये जो small छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, जिनकी length ये होगी as small rectangle, उसको along the change in UV, जो इंटीग्रल बनेगा वो इस पैच का एरिया होगा. So what I'm trying to say is that this is indeed the area of a small patch R on the surface, not R. It's the map. No, R is basically the region inside my UV plane. तो उसी का जो under this sigma 1 या sigma मैपिंग होगा इस पैच पे, तो उसका एरिया इसके बराबर होगा. और अंडर न्यू रिपैरामीटराइजेशन उसका ऑब्वियसली ये होगा, मतलब हमने पैरामीटर चेंज किया लेकिन फॉर्मूला तो सेम रहेगा. नाउ वी वांट टू शो दैट इंडीड जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से और इस तरह से, वो सेम आएगा. सो उसके लिए नाउ वी नो दैट, हम ये पहले भी कर चुके हैं कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेक्टर्स है,
it is basically sigma tilde cross sigma tilde v tilde, थोड़ा यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, is equal to the determinant of the Jacobian of the पैरामीटराइजेशन मैप। इसको हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, लेकिन वहां पे हमने लिखा होगा बजाय सिग्मा के क्या बोलते हैं आर यू, मतलब सिग्मा के बजाय आर लिखा होगा, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद द स्मॉलर पैच ऑफ द सरफेस वेयर j of phi is the Jacobian of the transformation, is the Jacobian matrix of phi. Hence, I would get integral over this region r tilde r sigma tilde u tilde of course vector cross product with sigma tilde v tilde d u tilde v tilde d u tilde d v tilde. This double integral should be equal to integral over this r tilde, and I just substitute it here, which would be the determinant of the Jacobian of phi multiplied by ru cross rv into du dv, du tilde dv tilde, right? Now, by the change of variables formula, so यहाँ पे अब जो इधर ये change है और ये change है, by the change of variables formula for double integral, this is precisely equal to integral r tilde determinant of Jacobian of phi, which transforms my variables ru cross rv du tilde dv tilde is the same as integral over r ru cross rv du dv, and we are done. बस इतना ही, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है तो इसके बराबर है, तो हमने एक्चुअली दिखा दिया ये इसके बराबर है, and we are done, and hence we are done. We are done. So I think that finishes our unit 3rd. So I don't think फिर भी मैं सिलेबस पे चेक करूंगा कुछ हमारा रह तो नहीं गया, वैसे मेरे पास सिलेबस है क्या? ओके, सो कोई जाग भी रहा है कि मैं ऐसे हवा में बोल रहा हूँ? Anybody awake? कितने आ गए अभी तक? 15. अच्छा, तो this I think finishes our unit 3rd. I'm not, मतलब फिर भी मैं अगर कुछ रह गया होगा तो उसको हम फिर करेंगे. So let's start now with our final part, जो कि थोड़ा सा और involved है, थोड़ा सा इससे मुश्किल है हमने अभी तक किया, लेकिन doesn't matter. तो उसमें से बेसिकली हम पहुंचना चाहते हैं, जो मैंने कहा था कि we want to get to the theorem egregium of the Gauss, that you can, that the Gaussian curvature of a surface does not depend upon basically the ambient space in which the surface is embedded. Yani the Gaussian curvature is intrinsic, and we can always evaluate Gaussian curvature with the help of the metric, the first fundamental form. यानी अगर मुझे EFG पता है, यानी वो 3 numbers that we can evaluate at any point, अगर मुझे कोई बताता है ये इसके values क्या हैं, उससे मुझे metric मिलेगा, that will give me how I will measure on a surface जिस पर हम हैं, हम कैसे उस पर measure करें length. अगर मुझे वो पता है, तो I can actually evaluate the curvature of the surface without any reference to the ambient space in which the surface lives. So उसके starting में हमें पहले करनी होगी what we call the fundamental equations of
मतलब there are certain fundamental equations of the surface. उसमें पहला है what we call Gauss formula, fundamental equations of the surface. तो उसमें पहला हिस्सा होगा अपना what we call Gauss formula. ये तीन फॉर्मूले होंगे to for evaluating the second order partial derivatives of a surface. Now for a surface, of course ये थोड़ा लंबा चौड़ा होने वाला है. I think so. इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जरा इस पे करना थोड़ा सा मुश्किल है. For a surface, R is equal to R at UV. The second order partial derivative, यानी R UU is equal to L times N. L you know the second order fundamental magnitudes में से L M जो है वही, plus the small l times R sub U plus some lambda times R sub V. Then I have R U V जो होगा वो बराबर होगा इसी तरह से M times the unit normal of the surface plus some small m times R sub U plus mu times R sub V. And similarly the third partial derivative in the second order partial derivative में जो तीसरा है R sub V, it is equal to the n times the unit normal plus mu times plus small n times R sub U plus mu times R sub V, where we can resolve these second order partial derivatives in terms of n, Ru and Rv. Because of course because Ru cross Rv they are mutually they are not aligned in the same direction because we are on a regular surface, so they are not linearly dependent, and n is orthogonal to both. So this triplet of vectors forms a basis for R3. So we can resolve any vector जो भी होगा into its three components along these three directions. तो वही हम दिखा रहे हैं कि हम RUU, RUV और RUV जो तीनों vectors हैं इनको हम resolve अगर करें into the three vectors into this direction, तो पहला वाला जो रेजोल्यूशन कंपोनेंट है या जो पहले वाला स्केलर है एल एम एन वो तो इजी है इवैल्यूएट करना. रही बात दिस एल एम एंड एन और लैम्डा म्यू न्यू की, we can actually write them in terms of EFG and their partial derivatives with respect to UNV, where L M N and lambda mu न्यू इनको हम बोलते हैं क्रिस्टोफल्स रूल्स. इम्पोर्टेंट बात ये है कि we can evaluate them and they are suitable functions of EFG in its geometric and first order fundamental magnitudes and their partial derivatives with respect to there are some combination of EFG and their partial derivatives, and we can resolve these second order partial derivatives into n Ru and Rv because they form the basis. Furthermore, then this L M and N ये तो हमें पता ही है, खैर L किसके बराबर है तुम्हें पता ही, it is RU dot what you have बोल गया N है ना, इसी तरह से M जो है that is obviously dot N, इसी तरह से N है dot N. Anyways, so basically ये है जो LMN और lambda n, they can be written in terms of EFG and its partial derivatives. That's what we have to show. ये किसके बराबर होंगे, थोड़ा लंबा थोड़ा calculation, but nevertheless we have to do it, है ना. Okay, proof बड़ा simple है जो मैंने कहा था. Now since
R sub u, comma R sub v and n form a basis for R3. These are three linearly independent vectors, so therefore they form a basis for R3. And L and N are the resolved parts, of R sub u, R sub uv and R sub vv along n. यानी पहले कंपोनेंट के बारे में तो कोई शक नहीं. We have, यानी पहले तो हमें निकलेगा we must have. मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी अगर R U U कोई वेक्टर है जो कि है in R3, then it would be some linear combination of the bases in R3, and it would be some, say, A times RU plus P times, चलो पहले वो लिखते हैं, A times N plus P times R sub U plus C times some R sub B. अब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ with respect to N, so of course इसको अगर N के साथ दोनों साइड्स का डॉट प्रोडक्ट लें, and using the fact that n is perpendicular to both RU and RV, so इनका जो इसके साथ जो मैं दोनों साइड्स का लेता हूँ n के साथ डॉट प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिस वुड बिकम 0 जब RU और RV के साथ n का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और बचेगा खाली a into n dot n. So basically this would be जो हमारा a नंबर है that would be just, क्योंकि n dot n तो 1 है, so therefore ये जो n के साथ नंबर होगा वो होगा RUU dot n, which is the same thing as L. वही हम कह रहे हैं, they are the resolved parts of this vector along this direction. That is basically the definition of the dot product. We have, हम लिखेंगे वही इक्वेशन हम दोहराएंगे, RUU is equal to LN plus L sub RU plus lambda R sub V. R sub UV is equal to M times the N plus small m times RU plus mu times R sub V. RVV is equal to, पहले component में तो कोई शक नहीं, the question is the other two components. And then I should have N RU plus mu R sub. So let's call this equation 1, 2nd and 3rd. हाँ, लेकिन वायर हमें अभी इनके बारे में कुछ नहीं पता. L M N and lambda mu are scalars which are to be determined. तो हमें इन scalars को मतलब evaluate करना पड़ेगा, and we will show that they just depend upon EFG and its partial derivatives. तो इसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. So let's do it. देखो E हमें पता है is equal to R sub U dot R sub U, right? So this implies that E sub U जो होगा वो होगा del by del R and partially differentiating R U dot R. So using the product rule, so that would be R sub UU dot RU plus RU dot RU. Since dot product is commutative, this would be just twice R sub U dotted R sub U. यानी E sub U जो होगा वो इसके बराबर है. इसी तरह से F जो है वो है बराबर R sub U dot R sub V के. अगर मैं F sub U ढूंढना चाहूँ, so that would be del by, sorry यहाँ U होना चाहिए, del by del U of RU dot RV. वो बराबर बाय चेन रूल होना चाहिए RUU dot RV plus, of course you should have RU dot RUV. So that would be FU. इसी तरह से G sub U को होगा बराबर twice RV dot RU. मतलब कोई ऐसा या VU या UV, they are the same because
or surfaces of class 2 at least. Similarly, EV जो है, EV होगा del by del V of E, that's equal to del by del V of R sub U dot R sub U. पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, so वो बराबर होगा R sub UV dot R U plus R sub U dot R sub UV. नहीं, ये तो UU है, U है, तो इट इज UV dot U, फिर होना चाहिए U dot UU. मैं क्या करता हूँ, V के साथ हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें. ओके, that seems fine. Yeah, that is actually using twice R sub U dot R sub U. That's because एक तो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स दोनों बराबर है और दूसरा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है. तो इसी तरह से FV जो होगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा, ये FV होगा R U V dotted with RV plus R sub U dotted with RV. और इसी तरह से GV जो होगा, क्योंकि मुझे इनके दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, would be twice R sub V dot RV. तो जिस तरह से ये वैल्यूट की, इसी तरह से ये भी वैल्यूट हो सकते हैं. Now solving, अब मैं इनको थोड़ा सॉल्व करूं, इनको सिंप्लीफाई करूं, I will see that पहले वाले में से कि RU dotted with RUU जो है वो बराबर होगा 1/2 into E sub U. पहली इक्वेशन में से. इसी तरह से R, अगर मैं दूसरी इक्वेशन को पकड़ूं, इससे मुझे मिलेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, hence R sub V dotted with R sub U, it would be FU. मैं यहाँ ले रहा हूँ R sub V, FU को अगर मैं लूँ, ओके, RU dot RVV, RV dot RUU कहाँ गया मेरा, F sub U माइनस, जरा देखते हैं, R sub U dot R sub UV, ये हुआ. हाँ, मैं go to RV dot UU, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल सही. इसी तरह से ये एक और मिल गया हमें, लेकिन ये बराबर होगा फिर F sub U माइनस, देखो अब R sub U डॉट R sub UV जो है वो होगा EV के बराबर. R sub U डॉट R sub UV जो है वो बराबर है 1/2 of EV. ये अपनी एक इक्वेशन, ये अपनी दूसरी इक्वेशन, राइट. तो मैं बनाऊँ थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, राइट. एंड सिमिलरली मतलब इसको पहले कुछ नाम दे देना. तो ये सारे सेट ऑफ इक्वेशन ये 6 होंगी, इसको नाम देते हैं हम 4 इक्वेशन, राइट. और इससे हमें मिलेंगी, और मतलब जब हम सॉल्व करेंगे, एक तो ये दो मिल गई, मतलब और हमें 4 इक्वेशंस मिलेंगी ऑलमोस्ट नंबर्स की, यानी हमें मिलेगा, आई थिंक इसको हम कल करेंगे, ये काफी लंबी कैलकुलेशन है, आज नहीं होगी. लेट मी स्टॉप इट.